Arushi with me. Welcome on the show. Hi, thank you so much. Did you expect कि मैं ऐसा प्रिपेयर करके आऊँगा कि मैं ऐसा आपको दे रहा हूँ? First of all, नहीं। beautiful साड़ी, beautiful साड़ी. Thank you. नहीं, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि I would be complimented so well. Thank you so much. So, giving a little background, I met Arushi at Isha Yoga Center, and she was a guest there, and I was volunteering. And she's so humble. मुझे लगा नहीं कि वो guest है. She's so grounded. तुम्हें लगा मैं वॉलंटियर हूँ वहाँ पे? नहीं मुझे लगा you like snobbish होगा थोड़ा. You look kind of Oh. celeb walking in, people coming to take me a selfie or things. अगर मैं इसे start किया, known for MTV Roadies. So what is it like? How did your life change? कि कौन थी पहले and now after Roadies, who is she? I would first answer who was Arushi before. So बहुत सिंपल लड़की दिल्ली की जो डांस को प्यार करती है, थोड़ी ढाका टाइप की है, तो लाइफ में माँ बाप का so I don't think people know that I switched from engineering college to Delhi University. I got into an engineering college और मैंने वो quit करके You were a science student. I was a science student. तो हाँ, ढाका टाइप की है, जो मर्जी है वो करती है, अपने ड्रीम्स के लिए पागल है, just like any typical Indian Bollywood lover girl. And Roadies के बाद I would say I became more focused and humble, I would say. Really? Yeah, because पहले जितना वो होता ना यंग ब्लड वाला खून था, वो थोड़ा सा काम डाउन हो गया. एंड क्योंकि लोगों ने अप्रिशिएट किया तो एक वो आई वुडंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी बट वो अप्रिसिएशन का वैल्यू समझ आने लग गया कि व्हेन पीपल स्टार्ट लविंग यू इन रिटर्न तुम्हें उनके लिए भी हैव टू गिव बैक टू देम. सो आई वुड से सेल्फिश, नॉट एग्जैक्टली सेल्फिश बट वेरी फोकस्ड सेल्फ ओरिएंटेड वाला पर्सन से आई बिकेम मोर पीपल ओरिएंटेड पर्सन. आई वुड से दैट. रोडीज पे मैंने जितना देखा है ना लोगों को, they're nothing before the show. Nothing बोले तो because they do not have any social presence on the digital world. After that there is like crazy people. हाँ, ये तुम उल्टा नहीं बोल रहे कि you became people become like Don type. यार अब मेरे को दुनिया जानती है, now I can do any sort of thing. But what you saying is totally different. मेरा काफ़ी उल्टा सीन था कि मैं पहले अपने कॉलेज की डॉन थी, डांस सोसाइटी वगैरह में डॉन टाइप सी. मैं लिटरली दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर तुम पूछो मेरे बैच से 2015 से 2017 वाला, 14 से 17 वाला, दे विल बी लाइक कि ये लड़की से बात करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं एक ना थोड़ा सा नाक चढ़ा वाली चीज़ होती है ना, वैसे घूमती थी. बट आफ्टर रोडीज आई थिंक आई वॉज जस्ट वेरी काम एंड कंपोज्ड एज अ पर्सन बिकॉज वो जर्नी तुम्हें तुम्हारे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस दिखा देता है. तो जितना तुम अपने स्ट्रेंथ को अच्छे से यूज़ कर पाते हो उतने तुम अपने वीकनेसेस को देख लेते हो कि भाई हाँ लाइफ में है दिक्कतें, तो इनको पहले थोड़ा सॉर्ट किया जाए. एंड सेकेंडली आई फील जो वो क्रेविंग होती है ना कि यू वॉन्ट पीपल्स अटेंशन, यू वॉन्ट देयर लव, यू वॉन्ट पीपल टू नोटिस यू, जब एक बार वो थोड़ी टच हो जाती है ना, देन दैट क्रेविंग डजंट स्टे लॉन्गर. देन इट्स मोर ऑफ लाइक अच्छा नाउ दैट पीपल लाइक मी, व्हाट कैन आई डू फॉर देम, हाउ कैन आई इंटरेक्ट विद देम मोर. आई थिंक दैट्स हाउ आई डिडंट बिकम दैट, रादर आई बिकेम दिस. What happened on the roadies journey? मतलब हुआ क्या लाइफ के अंदर कि you thought कि मुझे रोडीज पे जाना है? मैं personally I would never go to roadies. मुझे ऐसा लगता, I would think यार it's not about serious, the people who are not serious about life. They're like they're still finding life. मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर? दो मैंने भी ट्राई किया था, मैं फेल हो गया. I actually tried. I tried when Raghu Raji were there. I think it's 5 or 6, Roadies 6 I believe. Bani J वाला season था वो. Yeah. Wow, you auditioned from Delhi. Yeah. तब उस टाइम पे वो हाँ I was in the final round as well. हाँ but I didn't. तुम अंदर से तो रोडी हो, वो तो बस टीवी पे नहीं दिखा लोगों को. नहीं मैं रोडी नहीं हूँ. We'll talk. मैं पर्सनली इस चीज़ को मानती हूँ. आई थिंक मुझसे एक बार एक कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था ये कि हमेशा दिल्ली चंडीगढ़ के लोग रोडीज ही में क्यों जाते हैं, बाकी पूरे इंडिया से भी तो यूथ है वो क्यों नहीं जाता. तो आई पर्सनली बिलीव हर इंसान जो हमारी एज ग्रुप का है, या एक्चुअली एज भी छोड़ो, हर इंसान अंदर से रोडी ही है. रोडी का मतलब क्या है कि बेसिकली दे वांट टू prove themselves in the society, they want to make something of themselves, they want to experience adventure and take risks and overcome it. That's what it is. And then of course जो थोड़ा सा community वाली feel होता है कि you want to be in the good books of everyone. That's everyone's lives, no? It's just that it's not on TV, but that's what everyone is doing. Right. So I think और drama है, risk involved है, politics है, that's everyone's life. So I think everyone is in their own roadies seasons. But it's just not out there on TV. That's beautifully put up. Yeah. Is roadie real? मतलब मैंने रियलिटी शोज देखे हैं, जैसे इंडियन आइडल हो गया, वो ना ऐसा होता है कि कुछ टैलेंट दिखा रहे हैं, they're singing,
और तुम्हारा इंडियन गॉट टैलेंट हो गया, वो भी कुछ अलग, उसमें लोग अपनी स्किल्स लेकर आ रहे हैं। रोडीज पे आई डोंट नो व्हाट, तुम थोड़ा एक थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो या फिर यू आर जस्ट ट्रू टू योरसेल्फ, यू कैन बी अ रोडी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट अबाउट स्किल, वो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। आई वुड से रोडीज का स्किल इज योर पर्सनालिटी। लाइक तुम इंडियन आइडल में अपने सिंगिंग के लिए जज किए जाते हो, इंडियन गॉट टैलेंट में अपने डिफरेंट टैलेंट्स के लिए, अगेन स्किल, आर्ट एंड क्राफ्ट, वट एवर योर चॉइसेस, but roadies mein your skill is your personality. If you can sell your personality, if people like your personality, you can be on the show and you can ace the show. That is what I feel. Apart from that, then there are tasks, और obviously उनके टास्क इतने डिफिकल्ट नहीं होते, कोई भी कर सकता है, बट जिस एनवायरमेंट में तुम होते हो कि तुम you're sleep deprived for a month, you haven't slept, you're getting 1 hour of sleep every day, you're not getting the proper food, you're not in the best of weather environments, so you're basically being tested physically, and then of course there's politics and all, and mentally as well. तो उस environment में तुम कितना अपना best कर सकते हो, that is what this competition is all about. It is not about how loudly you can fight, it is not about how well you can perform in a task, it just tests you as a person, your character, कि तुम again वहाँ पे दोस्त होते हैं, दुश्मन होते हैं, तुम कितना अपने friends को अपने साथ रख सकते हो. It really tests the basic fundamentals of your life का model. So I would say it's the perfect competition or reality show. I would say if there are people who are interested in it, the youth, they should definitely go and try, क्योंकि it's a once in a lifetime thing कि ऐसा environment तुम्हें फिर से नहीं मिलेगा, ऐसा खुद को जानने का मौका तुम्हें फिर से नहीं मिलेगा. Like in the retreat, सदगुरु की जो हम retreat गए थे, वहाँ पे you are with people but you with yourself. Roadies mein you will experience that for a month. You're with people, you make friends, you make enemies, but you're with yourself, and in every task, in every situation, you're just talking to yourself. Can I do this? Can I not do this? So it's the perfect environment to really know yourself. Yeah, to know yourself and to challenge yourself and overcome those challenges. You get to know your strengths and weaknesses. You humble down. You get to understand people better, and you become more confident. If you're good at the show, you become more confident with taking risks in life and overcoming. You know what you're telling me is kind of Roadies is a spiritual show. ठीक है? A badass spiritual show. It is a badass spiritual show. Spiritual yeah. बोले तो because I'm just looking at the spiritual side of yours. What you're saying things, it's like you are there and there is this body which you're making use of it. I don't know if everyone experienced that, but मेरे लिए ये experience था कि I got to know myself better. That was the best thing that came out of the show for me. If I talk about spiritual side of yours, what is it? You do yoga. I've learned that over internet. How did this happen? Majorly after Roadies. So, जब मेरा season था, that happened during the lockdown, 2020 Roadies Revolution. And आधा season करने के बाद lockdown लग गया था. No matter how much I'm saying that it's a very beautiful journey, it is a traumatic experience. So, to get past it, you need to. It's like all the information that you've acquired on the show about yourself, now you need to really deep dive into what was it exactly, because the show to ho gaya. Now that it's up and running on TV, you get feedback from people, aapne aisa kyun kiya, waisa kyun kiya, and you start understanding your own psyche better. So I think that is where meditation and yoga came into the picture a lot. I used to do yoga earlier also during my dancing time, but meditation was this time that I really wanted to understand, okay, if I did this, how did I do it? Why did I do it? So yeah, it became spiritual. This is the first time I'm actually thinking of it this way, that it was a spiritual journey for me more than a entertainment journey. Just for example, I never thought I'd wear a sari in my this age. And I love wearing a sari after Roadies because it just gave me that confidence that yeah, a girl can be brave, she can be a badass, and she can be as feminine as she wants. So that is post the show. This is very beautiful, Putta.